Assalamu alaikum everyone. So here we are having a continuation of May-June 2023's paper AS Accounting and Variant 22. So in the previous lecture, as we know that we have done all the parts right from part A to part D. Here in this video, we are going to discuss point number E and F. Okay, so the E section says identify 3 points the directors should consider when deciding whether to pay a dividend. ठीक है, डायरेक्टर्स जब डिविडेंड पे करते हैं तो कौन से 2-3 कंसिडरेशंस होती हैं विच दे मस्ट टेक इनटू अकाउंट बिफोर पेइंग आउट द डिविडेंड्स. तो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट यहाँ पे आता है, डेफिनेटली दैट इज़ द लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स. सो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी दे हैव टू कंसिडर the liquidity of the funds. Why do they consider the liquidity? They have to consider the liquidity of the funds to pay dividends to shareholders, right? So सबसे पहला पॉइंट जो डायरेक्टर्स कंसिडर करते हैं कि क्या उनके पास इतने लिक्विड फंड्स यानी कैश में अवेलेबल हैं कि दे हैव टू पे द डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच दे हैव टू कंसिडर. दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली दे कैन से ऑब्वियसली इज रिगार्डिंग द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. So they also have to consider the expectations of the shareholders. They have to consider the expectation of the shareholders as per previous records, as per previous dividend payments, right? सो पहला पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे कंसिडर करना है वो ये कंसिडर करना है कि क्या उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है डिविडेंड्स पे करने के लिए. दूसरा, उनकी प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. डायरेक्टर्स ऑब्वियसली दे आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी, दे आर रनिंग द होल कंपनी, डेफिनेटली दे हैव द होल इन्फॉर्मेशन, दे एक्ट 9 to 5 ऑपरेशंस में वो काम करते हैं. सो डेफिनेटली दे आर हैविंग एन आइडिया कि पहले कितना डिविडेंड पे किया था एंड हाउ मच आर द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. एंड ऑब्वियसली they have to consider the amount of retained profits available for distribution. The amount of retained profits available for distribution. So these are the 3 basic points which the directors must consider before announcing a dividend pay. Moving on to part F of the questions. The directors of the J Limited wish to improve the company's liquidity. They'll choose one of the following options. Now, obviously, every director in every company, their primarily they are focusing on improving the company's liquidity. Liquidity is obviously the amount of cash available, right? Or how fastly you can convert your business or your assets into cash. So, option one, they allow trade receivables a cash discount of 5% for payment within 20 days. So that is the first option कि अगर हम अपने रिसीवेबल्स को जो है यानी अपने कस्टमर्स को मजीद कैश डिस्काउंट दे दें ताकि वो 20 डेज़ के अंदर पेमेंट कर सके तो डेफिनेटली वो हमें जल्दी पेमेंट करेंगे. वाई वुड दे पे अस अर्ली? वो जल्दी क्यों पेमेंट करेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ द 5% डिस्काउंट. सो स्ट्रैटेजी 1. स्ट्रैटेजी 2, मेक ऑल द परचेजेस ऑन द क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स हु इज़ प्रिपेयर्ड टू ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट. डेफिनेटली द ऑप्शन 2 वुड बी ईदर वेज. हमने अपनी अगर लिक्विडिटी इंप्रूव करनी है तो लिक्विडिटी हमारे पास वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. सो एज यू कैन सी वर्किंग कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. नंबर 2, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड पेबल्स. एंड थर्डली, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स. सो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो आपको इम्प्रूव होता है वो इन 3 चीज़ों से मिलके होता है. सो यहाँ पे ऑब्वियसली दे हैव नॉट टच्ड द इन्वेंट्री पॉइंट. सो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री कंसिडर नहीं करना. वी जस्ट हैव टू कंसिडर द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स. नाउ हैविंग अ लुक एट द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस. मार्क्स हमारे पास यहाँ पे है 7 मार्क्स. लेट मी टेल यू द स्प्लिट अप ऑफ द मार्क्स. बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में व्हेनेवर इट्स एन एडवाइस तो बेटा एडवाइस हैज़ टू बी एटलीस्ट इन 3 पैराग्राफ्स. Let me give you a brief sketch of how to write. Paragraph 1. Paragraph 1 में जब आप एडवाइस करोगे तो definitely you have to consider option 1. First you need to consider option 1. First you need to comment on option 1. Option 1 पे how to write it. Maximum marks हमारे पास जो इसके लिए है paragraph 1 के लिए या option 1 के लिए वो 3 marks हैं. At the most you'll be having 3 marks for this.
And then we have to move towards paragraph 2. If you look at paragraph 2 में definitely you have to consider option 2. So बेटा option 2 के भी जो मेरे पास यहाँ पे marks हैं, maximum मेरे पास 3 marks हैं. And then obviously in the last one para, you can call it as paragraph 3 or the last statement, that is you have to finally write your opinion, that is your suggestion. ठीक है, opinion, advice या suggestion, that is the typical aspect. अब बेटा मार्क्स का ब्रेकअप अगर देख लें, 3 marks एंड यहाँ पे 1 mark, 3 and 1. सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस वन, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो पैराग्राफ 1 मेरे पास यहाँ पे 3 marks हैं. अब 3 marks के लिए डेफिनेटली शुड आई गो फॉर द पॉजिटिव ट्रेड्स और द नेगेटिव ट्रेड्स. आइडियली द टेक्निक शुड बी कि यू हैव टू राइट एटलीस्ट फॉर 3 marks you have to write at least 2 advantages and at least 1 disadvantage. 2 advantages and 1 disadvantage. That's the typical point for this. 2 advantages and 1 disadvantage. Right now 2 advantages for point 2 and 1 disadvantage for point 2 or option 2. सो बेटा इस तरह का हमने कॉम्बिनेशन सेट करना है कि अगर हम ऑप्शन 1 को भी डिस्कस कर रहे हैं तो राइट नाउ वी आर मेकिंग एन एनालिसिस, हम अपनी ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं. ओपिनियन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारे पास क्या कहता है. ऑप्शन 1 डेफिनेटली ऑप्शन 1 हमारे पास क्या, अलाउ ट्रेड रिसीवेबल कैश डिस्काउंट. इससे होगा क्या, इससे डेफिनेटली ये होगा कि दैट विल, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट विल इनकरेज ट्रेड रिसीवेबल्स to pay us early. That is the first plus point or an advantages. And obviously, secondly, it will reduce the risk of bad debts. At the same time, there is a risk. Risk क्या है हमारे पास? The customers might not be able, at the same time the customers might not be able to pay us within 20 days. So the customers might not be able to pay in 20 days. So अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स की सेग्रीगेशन की है 3 marks के लिए, I've written 2 advantages and 1 disadvantages or 1 disadvantage. Likewise, if I move on to option 2 में हमारे पास क्या कहता है. Obviously, number one, it will have a positive impact on the profits. How? Positive impact on profits कैसे होगा? डेफिनेटली ओवरऑल पेमेंट्स जो आप परचेजेस की करेंगे तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड दैट विल इम्प्रूव द लिक्विडिटी. दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि क्या हमारे पास यहाँ पे सप्लायर्स आर दे विलिंग, क्या वो विलिंगनेस अपनी शो करेंगे, टुवर्ड्स द डिस्काउंट या towards the extended credit policy. Again, it's a question mark. So willingness of a supplier, obviously it's debatable, and obviously this issue can be taken further. And at the same time, if you look at the option 2 again, option 2 हमारे पास क्या था, make all the purchase on credit from different suppliers who's prepared to offer trade discount. So different suppliers जब हमारे पास आएगा तो we might lose the bulk discounts. So एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ये है कि जी वी माइट लूज, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट सप्लायर्स, वी माइट लूज बल्क डिस्काउंट्स. वाई? बिकॉज हम छोटे छोटे चंक्स में परचेज करेंगे, तो चंक्स में परचेज करने से हो सकता है हमारे पास बल्क डिस्काउंट जो है हम वो लूज़ कर लें. देन फाइनली सजेशन आपने यहाँ पे देना है, ठीक है. ओपिनियन, एडवाइस आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली यू हैव टू सपोर्ट इट विद अ कमेंट. ऑप्शन 1 अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली ट्रेड रिसीवेबल्स की क्रेडिट टर्म्स अगर मैं यहाँ पे इंप्रूव कर लूँ तो आई गो विद द फर्स्ट वन, ऑप्शन 1. द डायरेक्टर शुड गो. अब क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन के वर्ड्स क्या हैं. एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज एंड जस्टिफाई योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ एन आर्गुमेंट और अ कमेंट. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी ऑप्शन या ओपिनियन में द डायरेक्टर should go with option 1.
ऑप्शन 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगेन आई एम राइटिंग बिकॉज, ऑप्शन 1 के साथ बिकॉज। अब बेटा यहाँ पे देखिए मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। जो पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे गए हैं कोशिश करें कि उनको आप रिपीट ना करें। मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, दैट्स गोना encourage the trade that's going to encourage the trade receivables to pay early, reduce the risk of the bad debts, customer might not be able to pay in 20 days. So इन पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो इन पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट मुझे यहाँ पे अगर सोचना पड़ेगा कि जो मैंने ऊपर अपने पैराग्राफ्स में नहीं लिखा या ऊपर जब मैं एनालिसिस कर रहा था वहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ मैनी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज। अब बिकॉज के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा हुआ था जो मैंने ऊपर नहीं लिखा, बिकॉज बाय doing so, because by doing so this might improve, by doing so this might improve the overall sales of the business, the overall sales of the business, and hence the profits. So now we are having a complete package for our 7 marks. 7 marks को आप अगेन देखें, अगेन मेरे पास पैराग्राफ 1 3 marks for option 1 advantage disadvantage, 3 marks for option 2 advantage disadvantage, I mean positive impact and negative impact, and finally in last paragraph I'm constructing my opinion. So opinion supported by a justification over here. Definitely in paper while you will be writing this whole thing, you're not supposed to mention this in points. आपने points में नहीं लिखना point number 1 2 3, you don't have to number your points, right? मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए ताकि आपको points की clarification हो जाए. This should be a whole paragraph. तो आपका ये पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, नो नंबरिंग, नो बुलेट पॉइंट्स, दैट्स अ रूल, प्लीज डू रिमेंबर. एंड फाइनली ओपिनियन. सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द 7 marks in 3 different paragraphs. So that's it, G. We are done with question number 1.